Children, this is Push English and I'm Renuka Singh. So here I am with quick revision for CBSE class 12th English core Flamingo textbook. See, normally children complain me that ma'am, we are not able to identify the poetic devices. In different books, there are different poetic devices given. So here are some important poetic devices used in all the poems of your textbook. Let us proceed forward for these figure of speeches. Let us see how it is. And let us start with the first poem, My Mother at 66. These are some of the important poetic devices used in the poem, first poem, My Mother at 66. For detailed summary, overview, and the explanation, you can go and check the playlist and see the detailed video on My Mother at 66. So here comes the quick revision. Ashen like that of a corpse is an example of simile. Now let me just explain you what exactly simile is here. You can see two things, corpse and ashen like that. First of all, to identify simile, one should see some linking words used. Here the linking word used is like. इसके अलावा आप और दो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो as या so और एक और है may. ठीक है, तो जब भी ये लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करके हम किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं उसको हम सिमिली कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर किसको कंपेयर किया है? मदर को. मदर का चेहरा जो है इट हैज़ बिकम एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स. कॉप्स का मतलब डेड बॉडी होता है. ठीक है, तो सिमिली यहाँ हो गया. उसके बाद से एलिट्रेशन कहाँ पर है? एलिट्रेशन है आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. सो यू कैन सी द रिपीटेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट ए in this line. So here is alliteration. So alliteration is very easy to identify. Wherever alphabet is repeated, that is called any letter is repeated, that is called alliteration. Okay, then comes again one more simile is there. Here also you can see the linking word is as, and something has been compared to late winter's moon. So if you read the poem, you'll understand mother is as pale as winter moon. So she has been compared to late winter moon, where it means that the moon, as the winter moon lacks luster and brightness, similarly mother's face has lost that. It has become pale, it has lost its charm, the beauty which she used to have when she was young. ओके, तो ये सिमिली भी आई होप आपकी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आते हैं एलिट्रेशन. एक और एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, देखिए उसमें आप फेल्ट, फेमिलियर. So you can see this F getting repeated. So this is alliteration. It's very easy to identify. Then said, see, soon. So S is getting repeated. Okay, so this is also alliteration. Now, what is repetition? Let me just throw some light on this figure of speech repetition. See, there is a very thin line between alliteration, refrain, and repetition. How to identify these three, I'll tell you, children. Alliteration, I've already told you just now that it is repetition of alphabet. Okay, A for alphabet. Repetition is repetition of a word. You can see the word smile getting repeated thrice here. It is twice or thrice. So this is repetition. And what is refrain? So refrain is repetition of line. Is that clear? So which is at first step? You can remember this way, A-R-R. That is alliteration, repetition of alphabet. A stands for alphabet, A stands for alliteration. Next is repetition. Repetition is repetition of word, and refrain is repetition of line. Okay? So let us move further now. Coming on to the second poem of your textbook, An Elementary Classroom in a Slum. The poetic devices used here are many, but these are some of the very, very important poetic devices used. The first one is the line itself. The poem itself begins with first poetic device, and that is repetition. You can see far, far from gusty waves. So repetition, which word is repeated? Just now I explained in the poem, My Mother at 66, the repetition of the word smile. Similarly here, far word is repeated. Then comes like rootless weeds. So here is simile where the hair on the face of the
slum children had been compared to rootless weeds. Okay, so like is the linking word which helps you identify that there is comparison between two things. So the hair on their face, on their pallor is compared to rootless weeds. Weeds मतलब होता है unwanted plants, ठीक है, which grow on its own. उसके बाद से मेटाफर दो हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए. मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आस्क मी. तो सिमिली और मेटाफर में बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि सिमिली में जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वेर एज मेटाफर में हम नहीं करते हैं. तो यहाँ पर ये जो पेपर सीमिंग बॉय है, हमें ये बताया है कि वो बच्चा पेपर की तरह थिन लाइट वेटेड है, हल्का फुल्का है जैसे पेपर होता है. तो बस कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में आपको समझ में आ रहा है. रैट साइज में जो बच्चे की आंखें हैं, ये जो बच्चा है, the child who is like so hungry that his eyes seems to be searching some food like rat's eyes. तो उसकी आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर किया है. आप देख सकते हैं कोई लिंकिंग वर्ड यूज़ नहीं है, तो ये मेटाफर हो गया. उसी तरीके से एलिट्रेशन यहाँ पर क्या है? ट्री than this, in tree room other than this. So t getting repeated, so alliteration is here. Then comes alliteration again where dawn and dome, so again dd is getting repeated, so alliteration is there. Then there comes one more repetition, the world, its world. You can say the world, you can see the word world getting repeated, तो ये दो बार यूज़ हुआ इसलिए इसमें रिपीटिशन है. उसके वजह से मेटाफर क्या है? नैरो स्ट्रीट, यानी नैरो स्ट्रीट से यहाँ कहीं ना कहीं मतलब है जो कंजस्टेड घर हैं इनके, उनको कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो वो मेटाफर हो गया. सील्ड इन विद lead sky, I'm sorry, A should not be here. So here again one metaphor is there. Sealed in मतलब covered up. अब यहाँ पे lead sky जो है, ये lead sky ये हो गया हमारा मेटाफर, जहाँ पे स्काई के कलर को लेड के कलर से कंपेयर किया है. ठीक है. उसी तरीके से स्टार्स ऑफ विजडम, यानी कि जो स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी लाइफ में डायरेक्शन देते हैं, सिमिलरली जो नॉलेज होती है वो हमको एक डायरेक्शन देती है हमारी लाइफ में. आगे चल के और आप बढ़ेंगे थर्ड स्टैंजा में तो यू विल फाइंड वन मोर रिपीटिशन, सेम वर्ड लाइक इट वाज इन द फर्स्ट लाइन, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, आगे चल के है फार फार फ्रॉम रिवर्स. ठीक है ना, तो वो रिपीटिशन हो गया. शिप्स एंड सन क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? शिप्स एंड सन सिम्बॉलिज्म भी है और साथ के साथ इसमें आप देख सकते हैं एस रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर शिप्स एंड सन एंड लव, इसमें रिपीटिशन है, repetition of the word and. So there are many poetic devices used like this. Similarly metaphor, जहाँ उनके congested slum huts को compare किया गया है crammed holes से. ठीक है, तो ये हो गए मेटाफर. इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे एंडलेस नाइट मेटाफर क्यों है? क्योंकि इनकी जो लाइफ है इट इज़ में जो सफरिंग्स हैं उसको वो एंडलेस है, कभी नहीं ख़त्म होगी, कभी ना ख़त्म होते हुए रात की तरह. ठीक है, उसके बाद से सिमिली तो बहुत इजी आइडेंटिफाई करना. लाइक लिंकिंग वर्ड है बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे किसी पत्थर के टुकड़े पर अगर आप कांच मारें तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो उसको उससे कंपेयर किया है. मेटाफर में एज बिग एज डूम, तो इनके जो ये स्लम एरियाज़ हैं ये डूम की तरह, यानी ये डिस्ट्रक्शन की तरह ह्यूज हैं. तो एज लिंकिंग वर्ड यहाँ यूज़ हुआ, तो यहाँ पर एज बिग एज डूम है. आई एम सॉरी, यहाँ पर ये मेटाफर नहीं होगा, यहाँ पर ये सिमिली होगा. ओके, SIMILE. ठीक है, ये मेटाफर नहीं होगा. ऑल ऑफ देयर टाइम, अगेन टाइम T and their T, so T is getting repeated, alliteration is there. Space are foggy slums, again S is there, S is getting repeated, alliteration is there. As big as doom, this has already been done, we have already discussed it, it is not metaphor, it is simile. Okay, आगे चलते हैं. They that shut upon their life like catacombs. अब यहाँ जो है इसमें आइडेंटिफाई करिए, देखिए T रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया. लाइक कैटाकोम्स, उनकी ज़िंदगियाँ किसकी तरह हैं? कैटाकोम्स की तरह, अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ ग्रेव्स की तरह हैं, तो यहाँ सिमिली हो गया. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक
तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रेक को जो है 3 बार रिपीट किया गया है, रिपीटेशन हो गया. एंड लेट देयर टंग्स, अगेन टी 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 गेटिंग रिपीटेड, सो एलिट्रेशन इसमें आ गया. इस तरीके से आप देख सकते हैं. और आई होप आपकी समझ में आ गया होगा. जो बाकी के 3 पोएम्स हैं उनको मैं बाद में लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय बाय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस इज द ओनली way which I could take out to do quick revision of the poems, and I'll be taking up these kind of things, some new experimental things in my video. Bye bye, God bless you all.